Hello dear students. So today we are going to discuss a very important topic in biology, and the topic is blood pressure. Okay, but before we discuss this chapter, there are some basic concepts that we need to dive into. So let's get started. In our body we have a very important organ. We call that organ as heart. What's the function of the heart? We already know that it functions to pump the blood to different parts of the body. Fine. But this transportation of blood from heart to the body, it's not that simple. Okay. Basically, from the heart, there are some different blood vessels. There are some small pipes that arise, and from these pipes, the blood is supplied to the body. Let's say, for example, this is human heart, for example, and human heart is filled with blood. Okay. Now, from this heart, let's suppose there is a blood vessel that arises, and this blood vessel supplies blood to different parts of the body. Okay. Now, when this blood is present in this blood vessel, it will naturally exert a pressure on the walls of the vessel in which it is present. Okay. We call this pressure simply as the blood pressure. Fine. So you can easily describe blood pressure as the pressure that is exerted by the blood on the walls of the vessels in which it is present. Okay. So the next concept that's very important is that this blood pressure, it's never constant. It continuously keeps on changing. And the important question in this is why the blood pressure continuously changes. Okay. So basically our heart, it shows two important movements, two very important movements. The first movement is the contraction. Okay. And the second very important movement that it shows, that's called as relaxation. Okay. Now see, let's take this phenomenon. Every time the heart contracts, every time the heart squeezes, it pumps the blood into the blood vessel with a very, very high pressure. It's completely a natural phenomenon. Okay. Now, when the blood is under high pressure, it will naturally apply very high pressure on the walls of the blood vessels. That means during contraction, the blood pressure is going to be very, very high. We call this high blood pressure as the systolic blood pressure. Systolic blood pressure, and the systolic blood pressure is high. Okay, why is it high? Because of the contraction of the muscles of heart. Okay, now next, when the heart relaxes, the blood pressure eventually decreases, and this low blood pressure is what we call as diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure. This diastolic blood pressure is very, very low. So now you know that the blood pressure is never constant. It continuously keeps on changing. Sometimes it attains a high value and sometimes it attains a low value. The higher value is because of the contraction of heart muscles, and the lower value is because of the relaxation of heart muscles. Okay, so now we are clear with the two basic concepts of blood pressure. The next important thing is the measurement of the blood pressure. Okay, so the standard apparatus that is used for the measurement of the blood pressure, that's called a sphygmomanometer. Okay, and this setup consists of, first of all, an inflatable cuff. जिसका प्रेशर हम लोग continuously vary कर सकते हैं. किसके through vary कर सकते हैं? There is a bulb provided. Okay, plus it also has a stethoscope. Why is it provided? I'll be telling you later. Also, there is a mercury column that's provided with the instrument, and against this mercury column there are different measurements given. Okay. Now, let's consider that this is the arm of a patient whose blood pressure we are going to measure. Okay. Now, this forearm, like all other body parts, it receives its blood from heart. Okay. And this special blood vessel that supplies blood to this arm, we call this as brachial artery. Fine. Now,
We know that this artery is receiving blood from where? Heart. Okay. Now the patient is provided with a cuff. एक कफ बांधा जाता है उनकी फोर आर्म पे, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, पफ के पास एक बल्ब प्रोवाइड किया गया होता है. हम इस बल्ब को कंटिन्यूसली स्क्वीज करते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं, जिसकी वजह से कफ का प्रेशर इंक्रीज होता है. जैसे ही कफ का प्रेशर इंक्रीज होता है, जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज आवर ब्रेकियल आर्टरी. अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब इसमें ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है. ओके, नाउ ये हमारा ब्रेकियल आर्टरी है, लेकिन जैसे ही मैंने कफ का प्रेशर इंक्रीज किया, ये ब्रेकियल आर्टरी धीरे धीरे करके स्क्वीज करना स्टार्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लड फ्लो है वो भी धीरे धीरे स्टॉप करता है, धीरे धीरे कम होना शुरू कर देता है. उसके बाद जब मैं प्रेशर को कंटिन्यूसली बढ़ाती जाती हूँ बाय पंपिंग दिस बल्ब, व्हाट हैपन्स इज देयर कम्स अ पॉइंट जब आपका जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कंप्लीटली कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कंप्लीटली स्क्वीज हो जाता है, और इसकी वजह से जो ब्लड होता है हमारी ब्रेकियल आर्टरी में उसका फ्लो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है. ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उसमें अगर आप मर्क्यूरी का रीडिंग देखेंगे, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 125 mm ऑफ Hg. मतलब अगर आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं, जैसे आपने कफ बांधा, जस्ट गो ऑन स्क्वीजिंग द बल्ब, गो ऑन स्क्वीजिंग अंटिल द प्रेशर रीच 125 mm of Hg on the sphygmomanometer. At this point of time, what happens is blood flow completely stop हो जाता है. Now what we do is we slowly and steadily start releasing the pressure. जो बल्ब अभी भी हमारे हाथ में, हम इसको धीरे धीरे करके रिलीज करना स्टार्ट करते हैं. What happens is कफ का प्रेशर इसकी वजह से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है. Initially it was 125, now the pressure will go on decreasing, decreasing, decreasing. जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमारी ब्रेकियल आर्टरी धीरे धीरे करके रिलैक्स कर रही है. जैसे ही रिलैक्स होना स्टार्ट करती है, देयर कम्स अ पॉइंट जब ब्लड का फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाता है, और इस टाइम पे आपको एक टक वाला साउंड सुनाई देता है, एक टक साउंड इज क्रिएटेड. एट दिस पॉइंट अगर आप स्फिग्मोमैनोमीटर में रीडिंग चेक करोगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120 mm ऑफ Hg. ये वाला पॉइंट जब आपको टक साउंड सुनाई देता है, इट मीन्स कि ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया है. ओके, नाउ हम कंटिन्यूसली प्रेशर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, फर्दर हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. एंड वट हैपन्स इज ये टक साउंड भी धीरे धीरे करके फीबल होता जा रहा है. एंड देयर कम्स अ पॉइंट जब हमारा साउंड कंप्लीटली डिसअपियर करता है. इस मोमेंट पे अगर आप स्फिग्मोमैनोमीटर में रीडिंग चेक करेंगे, इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80 mm ऑफ Hg फॉर अ नॉर्मल पर्सन. ओके, सो हमारे पास दो रीडिंग्स आ गई. वन इज 120 mm ऑफ Hg, another is 80 mm of Hg. If we go back to the first slide, we have already discussed that the diastolic pressure is always low and the systolic blood pressure is always high. Among these two readings, which one is higher? It's 120 mm of Hg for sure. We call this as the systolic blood pressure, and this one is the diastolic blood pressure. Okay, now जो आपको साउंड का अपीयरेंस और साउंड का डिसअपीयरेंस चेक करना है, वो आप चेक करेंगे श्योरली बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो हमने ऑलरेडी पेशेंट की आर्म पे एडजस्ट किया हुआ होता है. सो नाउ इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट्स द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर अ नॉर्मल पर्सन, यू आर श्योरली गोना से 120 upon 80 mm of Hg. And at this moment of time, you already know that this 120 level, why is this higher? Because it is due to the contraction of the muscles of heart. And why is this lower? It's because of the relaxation of the muscles of heart. So 120 upon 80 mm of Hg is the normal blood pressure. Thank you so much. Thank you.